Good morning, students, and once again a very warm welcome to the English world of Aradhya. I am Rashmin Davi, teaching the students of English medium of standard 9 to 12 in this particular class. Okay, students, we were doing second chapter, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Now, Long Walk to Freedom is the title of his own biography, and from this only this particular lesson is taken. We had also seen the background of how South Africa remained slave for 300 years under the white rule, and how the British people, the white people, they adopted the policy of apartheid and started showing discrimination towards the black people, how they started torturing the black people. Okay, all those we had seen. Nelson Mandela himself was arrested and put in prison for 30 years. So 30 long years of his young life he spent in prison only. But then also he did not give up. Before that also so many people had made sacrifices struggling against this white rule. They wanted to abolish this policy of apartheid, because I told you 1945 onwards most of the countries of the world were getting their independence. So they were also eager for their independence. So they also started like that struggle against the white rule. Okay, for many years it remained, but I can say they were the last to get their independence. They got their independence in 1994. So 1994, when first democratic elections were held in South Africa, Nelson Mandela's African National Congress won 252 seats out of 400, and the country got their first black president. Okay, all that we had seen. Along with him, two other people were also sworn in as the first vice president and second vice president. Okay, then we also had seen that the leaders and the dignitaries of more than 140 countries also remained present. So this was a historic gathering for all of them. Okay, they were taking pride in that on this particular land of South Africa, in future also it is difficult to bring so many leaders of the world from 140 countries together. So this was a historic day. Remember, it was 10th May, which is considered as an autumn day because that is the time of autumn season in South Africa. So that's why it was also known as the autumn day gathering, and it took place in the amphitheater of the Union buildings of Pretoria. So all those details you'll have to keep in mind. Then we also saw his speech. In his speech, he firmly said that never, never, never again will this particular land, their own land, beautiful land, will come under the power of another one. They would not see any such thing in history also. It means he is showing his firm determination that we will not allow ourselves to be the slave of another country in future. We will maintain our independence for a long, long time. And also he said that now their fight, they got the political freedom. Now their fight would be against the poverty, certain problems they are facing. So poverty, for peace and for their dignity, they would continue to fight. Now their fighting motivations are diverted towards all these things, as it happened in India also. After independence, yesterday I told you we had to import the things from the other countries, but because of the green revolution and white revolution, now we don't have to demand grains or milk and milk products from the other countries. Instead, we export them to the other countries. That much self-reliant India has become. Now Africa also will have to divert their all efforts for achieving such goals. Okay, then he takes us back into the flashback, how this apartheid came into being and how their people raised their voice against the white rule and how they were tortured. Okay, and how they were pushed to their limits. All those things you will see now onwards. So I'll continue the lesson from there.
That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. So, those who have given their lives for the freedom, he stresses this point that their suffering and courage can never be repaid. उसका हम कर्ज चुका नहीं सकते. इन्होंने जो बलिदान दिया है, जो टॉर्चर सहा है ब्रिटिश लोगों के सामने, वहाँ वाइट लोगों के सामने, ओके, उसको कर्ज हम चुका नहीं सकते. दैट मच दे सफर्ड. ओके, so not one or two people but thousands of his people. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots yani deshbhakt, who had gone before me. So he was also getting the same feeling. Many people took part in this freedom struggle. Many of them died also. Many of them could not bear the torture given by the white people, so they had to lose their lives. Okay, but luckily Nelson Mandela was alive, so he feels that he also feels like one of them who have gone earlier. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought, had done, had achieved. Okay, here 2 points he again brings to our notice, that he was pained, he was sad that he was not able to thank all those people who have sacrificed their lives because they are no more. So if he wants to thank, whom will he thank? And secondly, he also is sad at the fact that those people who sacrificed their lives, who bore all those inhuman treatment, are not alive to see that their sacrifices has brought them their freedom. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people, because this policy continued for more than 80 years, students. So this 80 years is a long time. Okay, already they were slaves for 300 years, but apartheid policy brought more torture, more sacrifices on the sides of African people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. So it was a big hurt given by the white people to the black people. For so many years they continued to torture them. So it cannot be easily forgotten. Okay, ये hurt में से बाहर आने में time लगेगा. That's why he says that for many years, okay, it will take many years to recover from this profounding hurt. Profound yani huge hurt. Okay, but the decades of the oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulas, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwes of our time. Now here, before the names of everyone, he has put article the. Normally, students, we don't put article the before the proper noun, but here it is put before every proper noun. Okay, we don't call Shah Rukh Khan as the Shah Rukh Khan. Do we call? No. But when the is put before such name, it means there are people who are like them. So this decades of oppression and brutality, they were very brutal. घातकी लोग बन गए थे white लोग. They were continuously oppressing such black people. तो इसकी वजह से एक अनइंटेंडेड इफेक्ट हुई जिसका कोई इरादा नहीं था. वो इफेक्ट क्या थी? इसकी वजह से many freedom fighters came. Here he has taken the names of a few only, but before the names of all those few he has put article the. यानी इनके जैसे बहुत सारे freedom fighters, thousands of freedom fighters joined this struggle for the freedom of Africa. Okay. Men of such extraordinary courage, and who were they? Many a times any unknown person also was there. उसका नाम हम कुछ नहीं जानते थे. वो भी आज़ादी की लड़ाई में था. But he also showed extraordinary courage. And courage, real courage can be seen not in killing the person. Real courage कहाँ देखने को मिलती है? सामने वाले को मारने में नहीं.
बट खुद मर जाने में तुम मुझे कितना सताओगे? हाउ मच कैन यू टॉर्चर मी? आई विल रिमेन विथ माई कंट्री ओनली. आई विल गो ऑन फाइटिंग विथ माई country only. So this particular courage is what not in hitting others, but in getting the blows from the other, in getting the torture from the other. Okay, some of our old freedom fighters like Gandhi ji, Bhagat Singh, Khudiram Bose, all those guys, they showed this sort of courage. हमको कितना मारोगे, कितना तड़पाओगे? ओके, वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप. वी विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर आवर फ्रीडम. एंड दैट सॉर्ट ऑफ करेज ओनली वॉज शोन बाय सो मैनी अफ्रीकन पीपल विथ सच नेम्स. ओके, करेज, विजडम एंड जनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन. बराबर, इतना उन्होंने करेज दिखाया, इतना विजडम दिखाया, इतनी जनरोसिटी दिखाई, उदारता दिखाई कि ऐसा शायद ही फ्यूचर में किसी में देखने को मिले. ऐसे बलिदान देने वाले लोग बहुत कम होंगे. These days, students, if you see, if a person is taken into the lockup and given some beating, is ready to accept the fault which he has not done, is ready to accept the crime which he has not done. क्यों? वो मार के सामने मार नहीं झेल पाते हैं, और उसकी वजह से जो क्राइम नहीं किया है वो भी वो कबूल लेते हैं. वो थर्ड डिग्री इस्तेमाल करते हैं. बराबर, तो उसका क्या है इस स्टूडेंट्स? दैट इज यूज्ड टू मेक द पर्सन, अरेस्टेड पर्सन, एक्सेप्ट दैट ही हैज डन दैट. पर यहाँ ऐसी ट्रीटमेंट इन लोगों को दी गई थी. सम ऑफ द ट्रीटमेंट, इफ यू हियर, दे वर व्हाट कैन इजिली रेज योर नर्व्स. उनके नाखून ऐसे प्लायर से खींच लेते थे, नाखून प्लायर से खींच लेते थे. देन ऑल्सो दे रिमेन्ड स्टक टू देयर डिटर्मिनेशन कि वी विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री. सेम थिंग वॉज शोन बाय भगत सिंह एंड सुखदेव, राजगुरु. वो सब लोगों ने यही सब बहादुरी दिखाई थी. उन्होंने वहाँ जाके किसी को मारा नहीं था, पर बहादुरी दिखाओ, तुम्हारी लिमिट दिखाओ, कब तक तुम सहन कर सकते हो. एंड दे ऑल शोड देयर लिमिट. ओके, जब ऐसा ऑपरेशन या तो टॉर्चर हाई लेवल पे जाता है, देन ओनली द ट्रू कैरेक्टर और द स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज नोन. यहाँ ब्लैक लोगों के साथ ऐसा ही होता था. एंड ही सेज दैट आने वाली पीढ़ियाँ शायद ऐसा नहीं दिखाए. ओके, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. देखो, व्हाट आई एम टेलिंग, सेम थिंग इज टॉक्ड ओवर हियर. ऐसे कैरेक्टर यानी स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेक्टर दिखाने के लिए क्या है, ऐसा ऑपरेशन भी होना जरूरी है, ऐसा टॉर्चर होना भी जरूरी है. वो एक हद तक टॉर्चर करते रहे तो बराबर है, पर उससे आगे जाए, उससे आगे जाए, देन तभी इन लोगों की सही स्ट्रेंथ बाहर आती है. स्टूडेंट्स, ओके, माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनेथ इट्स सॉइल. वी नो, हमारे भी बहुत सारे इंडियन लोग अफ्रीका की ये माइंस में काम करते हैं. वहाँ गोल्ड माइंस ज़्यादा है, जेम्स माइंस ज़्यादा है, वहाँ मिनरल्स भी ज़्यादा है. तो ये बोलते हैं, मंडेला कहते हैं हमको कि उनके देश में ये मिनरल्स के बारे में देखे तो मिनरल्स में वो बहुत रिच है. गोल्ड वहाँ बहुत है, खान खोदते हैं तो अंदर से गोल्ड की, सोने की खानें बहुत है. सो आवर इंडियन पीपल ऑल्सो हैव मूव्ड ओवर देयर टू वर्क ओवर देयर, ओके, एंड टू अर्न मनी. तो वहाँ बहुत है. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. यहाँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेल्सन मंडेला, व्हाट इज इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ? उनकी सबसे बड़ी संपत्ति कौन है? ये सोने की खानें या तो ये हीरे की खानें, वो नहीं है. देयर ग्रेटेस्ट वेल्थ इज देयर पीपल. बराबर, अगर लोग ही ऐसे पेट्रियोटिक पीपल नहीं होंगे स्टूडेंट्स, तो वो देश तो किसी और के हाथ में चला जाएगा, तो ये गुलाम बन के रहेंगे, कोई आज़ादी के लिए लड़ेगा ही नहीं. तो जब लड़ेंगे, खुद का राज आएगा, तब वो जो भी मिनरल रिसोर्सेज है वो दे कैन एंजॉय. तो इसलिए वो बोलता है कि भले ही हमारे देश में ऐसे सोने की खानें हो, हीरे की खानें हो, बट हमारी सबसे बड़ी संपत्ति कौन से है? तो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है ये हमारे लोग.
जो कभी भी ऐसा है तो दे कम यूनाइटेडली एंड दे गो ऑन फाइटिंग, दे बेयर द टॉर्चर, एवरीथिंग. Finer and truer than the purest diamonds. And how he has compared the people with the diamonds. He says that they are finer. डायमंड से भी अच्छे हैं एंड ट्रूअर, और सच्चे भी है. डायमंड जितने सच्चे होते हैं उससे भी ज़्यादा सच्चे उनके लोग होते हैं. ओके, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स मीन्स कंपेनियंस इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. तो वो जब छोटे थे, नेल्सन मंडेला व्हेन ही वाज अ स्मॉल बॉय, ही हैड आल्सो जॉइंड दिस स्ट्रगल. ही हैड सीन मैनी पीपल बीइंग टॉर्चर्ड बाय द वाइट पीपल, एंड दोज पीपल वुड नॉट डिनाई, दे वुड कंटिन्यू टू फाइट फॉर द फ्रीडम. तो उनको देख के ही इसने ये करेज का मतलब इनको पता चला. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. टाइम एंड अगेन यानी frequently I have seen his own people, he says. मैंने कई दफ़ा अपने खुद के लोगों को देखा है. ओके, आदमी औरतें सब रिस्किंग देयर लाइव्स, अपनी लाइफ जोखम में डाल देते हैं. उनको पता है कि आई हैव दिस वन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स माय फैमिली, मेरा फैमिली के प्रति कर्तव्य है. तो ऐसी हालत में उन्होंने फैमिली को महत्व नहीं दिया, देश को महत्व दिया और देश के लिए अपनी जान भी दे दी. ओके, गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. एंड व्हाट इज दैट आइडिया? दैट वी हैव टू गेन आवर फ्रीडम, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस अपार्थाइड पॉलिसी. ये आइडिया है, इसके लिए उन्होंने अपनी जान भी दे दी, अपना जीवन दाव पे लगा दिया, रिस्क में जोखम में डाल दिया. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. बोलते हैं कि मैंने ऐसे भी लोग देखे हमारे देश के जो ये टॉर्चर कितना भी करे, ओके, कितना भी उनके ऊपर अटैक करे, दे रिमेन फर्म, स्टैंड अप टू यानी रिमेन फर्म विदाउट ब्रेकिंग, टूट नहीं जाते हैं वो, अपने इरादों में मक्कम है. कितना तुम मारोगे, कितनी दफ़ा जेल में रखोगे, रखो, वी विल नॉट चेंज आवर डिसीजन. शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस. ओके, रेजिलियंस यानी फ्लेक्सिबिलिटी दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. Okay, that disobeys the imagination. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. Now here he gives us the definition of courage from his point of view. Courage क्या है? तालाब में डुबकी लगाना करेज है? आग में हाथ डालना करेज है? करेज है क्या? So from his point of view that courage was not the absence of fear. कोई आदमी बोले कि मुझे डर नहीं लगता है, इतनी हिम्मत मेरे में है, तो दैट इज़ नॉट द रियल मीनिंग ऑफ करेज फॉर नेल्सन मंडेला. डर बोले सबको लगता है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, पर वो डर के ऊपर तुम जीत पा लो, दैट इज़ द करेज फॉर हिम. ये वो एड में भी ऋतिक रोशन बोलता है ना, डर के आगे जीत है. तो यही बात है, डर तो हम हर एक में होता है. दे मे नॉट टेल यू ओपनली, but that fear is there in everybody. But when you get a triumph over it, then it is the real courage. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Here he says it more clearly कि बहादुर बंदा कौन सा है? वो नहीं जिसको, जो कोई बात से डरता ही नहीं है, वो बहादुर बंदा नहीं है. but he who conquers that fear, पर कोई बात से डरता है, पर वो डर को वो जीत लेता है. बराबर. अब डर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसमें भी डर है, बट ही नोज हाउ टू टैकल दैट फियर. दैट इज द ब्रेव मैन फॉर हिम. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर ही गिव्स अस द क्लियर कट मीनिंग ऑफ ब्रेवरी, व्हाट इज हिम. So I am sure students you have understood the meaning of bravery and courage according to Nelson Mandela. Your meaning for courage and bravery may be different, but according to Mandela, what is bravery and what is courage, you can come to know through these two lines. In our next paragraph, we will see now his attitude, his idea about love and hate. He tells us very clearly in our next paragraph what is his idea about love and hate and what is there. He says that essential goodness is there in every person, but sometimes we hide, but anytime that goodness can come out. Okay, I have already
mentioned over here. Okay, essential goodness in man. So essential goodness is there in every person. He may hide it for sometimes, पर ये अच्छाई जो उसकी है कहीं ना कहीं बाहर आएगी. All those we will see in our next video. Till then, just go through the lesson once again. Pay attention to all the punctuation marks, all the words, because you will have a separate question for punctuation marks plus blanks. So you must know which word will come where the punctuation mark comes. Okay, just go through it. Thank you and have a nice day.